So यहाँ पे this is what addition polymerization is. Okay, you've got lots of monomers. In addition polymerization, the same monomers in which the carbon-carbon double bond, they undergo under high temperature and pressure conditions, and they are converted into a single chain or a carbon-carbon single bonds. Basically, the double bonds, they are Okay. converted into the single covalent bonds. And the same monomers, they are utilized in addition polymerization. तो ठीक है, AS का ठीक है, वो रिवीजन भी होगी, वो आपस में ना सारे मोनोमर्स दे आर ऑल जॉइनिंग अप, ठीक है, और मतलब वो आगे कंटिन्यू कर रहा है. सो एनीवेज मुझे बताओ डेल्टा एस पॉजिटिव और नेगेटिव डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ है और कम हुआ है? A decrease. ठीक है, इट्स डिक्रीज इन डिसऑर्डर because you have many monomers. And now you have a single polymer, right? So they're now more ordered, right? So delta S is Sir, negative. हाँ जी. सर सर देखें, आपने कहा कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे जो है हमारे पास मैनी मोनोमर्स यूज हो रहे हैं ना, तो मतलब अगर हम आफ्टर पॉलीमराइजेशन देखें तो हमारे पास से सेम कार्बन और हाइड्रोजन जो है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर द सेम, सो देन हाउ इट इज नेगेटिव? नहीं, ये था ना कि देखो, अगर मैं इसको विजुअली इफ आई शो यू कि ये इंडिविजुअल मोनोमर्स थे, ठीक है, दे वर ऑल फ्लाइंग अराउंड, ठीक है, और अब क्या हुआ है, नाउ दे फॉर्म्ड अ चेन अ पॉलीमर, ठीक है, एंड ऑल द मोनोमर्स आर नाउ इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. मैंने कहा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ दे डिक्रीज, पहले यू हैव, यहाँ पे क्या है, यू हैव मेनी पार्टिकल्स, राइट, एंड नाउ यू हैव वन पार्टिकल, राइट. डिसऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना. This is one particle and this is many particles, right? Is that clear? नो सर. इसको, हाँ ठीक है, क्लियर है. या इस तरह सोच लो, गाड़ी के पार्ट्स हैं वो सारे दे ऑल सेपरेट, ठीक है, दैट्स वेरी डिसऑर्डर्ड. इंजन कहीं और पड़ा हुआ है, टायर्स कहीं और पड़े हुए हैं, and bonnet कहीं और पड़ा हुआ है, everything is separate, right? And you connect them all together and you form one car, right? So from many parts now you have one car, so disorder has decreased, right? Is that clear? यस सर. ठीक है, so disorder has decreased. तो ये तो खैर इसकी एग्जांपल थी. मुझे बताओ उसका कि व्हाट अबाउट कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है. सो I'm अब नाउ यू जस्ट फॉर रिवीजन व्हाट हैपेंस इन कंडेंसेशन पॉलीमर्स के if I take polyesters for example, तो polyesters में क्या होता है, you have a monomer and स्क्वायर की बड़ा, अच्छा, you have a monomer और इस तरह के ना you have many monomers. जो तीन बना लेते हैं, ठीक है, and all these monomers have थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं. अच्छा, all these monomers have वो diol or dicarboxylic acid, if you remember that. So you've got an OH, a diol, and you have a. So don't worry again if you don't remember condensation polymers anymore. Abhi, we just have to figure out whether delta S is negative or positive, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या होता है? How does polymerization happen? कि ये सारे हैं और if I paste them over here, the बीच में condensation happens. Water molecules they get removed, ठीक है? H and OH are going to be removed. H यहाँ पे. अच्छा, so these particles over here are going to be, they're all going to be removed.
and water molecules are going to be produced. So they're all connecting. Okay, so the chain continues, and every time you will have a water molecule that's going to be produced. चलो ये clear है. अब बताना ये कि what happens is the disorder increasing or decreasing? What happened over here? Order increases. Because So, in this case, so it'll be positive. it's going to be positive. Why is the disorder increasing? Because the water is added to it. So you've got more particles. You have more Yeah. particles, right? Attach. So more particles get produced, and your disorder eventually increases, right? So यहाँ पे in this case more particles. एक second hold करो. And therefore your delta S is positive. Okay, so there are tiny molecules of water that are also getting produced alongside. So you start off with fewer particles, now you have more particles. Okay, so your disorder increases. Ye clear? Is this part clear? Yes, sir. Okay, delta S is positive, disorder increases, right? अच्छा, then use your answer to work out. अच्छा, ये सारे छोड़ देते हैं. We just do one more. Okay, where they this one. अब बताओ, the first one is done. What about the second equation? ये वाली. Positive or negative? This one. Negative. Okay, so this one is negative. Yeah, that's negative. Because you have a gas on the product side, now you have a solid, right? So that's a less disordered state. So what about the third one? But this maybe I think it's क्या होगा? It's going to be. But you have a liquid state and now it's forming a crystal which is solid. So So no I change. guess नहीं negative नहीं होगा It's negative. क्योंकि सर liquid कैसे है ना. नेगेटिव हो गई? देखो सर liquid लिक्विड है तो एक्वस एक्वस तो नहीं है ना? नहीं liquid और aqueous में disorder में क्या फर्क है? सर मतलब इसको स्प्लिट product वो तो आपने बताया था ना, एक्वस में स्प्लिटिंग होगी ना, लिक्विड तो उसी तरह है, सॉलिड भी उसी तरह नहीं है. नहीं नहीं वो तो मैंने उसमें बताया था. वो तो इधर तो ये सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन करो. सॉलिड है और लिक्विड है. मतलब किस में ज्यादा डिसऑर्डर है? लिक्विड में ज्यादा डिसऑर्डर है ना. वो जो एग्जांपल था ना पिछला वाला, वो किसी और चीज पे अप्लाई कर रहा था. अच्छा, यहाँ पे सॉलिड जो स्टेट्स में हाँ यहाँ पे तो सॉलिड स्टेट ही इफ यू आर. डिफरेंट है ना. हाँ ठीक यहाँ है, पे तो स्टेट ही डिफरेंट है ना. ठीक है वो सर. वाला तो वो तो आयनिक कंपाउंड्स का था ना, एक्वस स्टेट वाला. ठीक है, वो तो एग्जांपल ही सर कुछ फिर ये और था. नेगेटिव होगा, इसका इसका नेगेटिव हाँ होगा. ठीक है, इसका नेगेटिव है. क्लियर है? ठीक है. ऐसे लास्ट वाला इजी है कि इट्स व्हाट्स हैपनिंग इज यू हैव सॉलिड एंड यू हैव एक्वस. लेकिन यहाँ पे गैस है. ठीक है, व्हेनेवर गैस गेट्स प्रोड्यूस्ड डिसऑर्डर क्या होता है? इट इंक्रीजेस, राइट? इट्स डेल्टा इज पॉजिटिव. क्लियर है? Yes, sir. जी सर. चलो ठीक है, ये वो हो गया कि that's the first thing that they're going to ask you. Delta is positive, delta is negative. ठीक है, most of the time you just apply common sense and you should be able to do the question. एक सेकंड रुकना, वापस हमारा बोर्ड किधर गया? अच्छा, so one second, ये वाला. अच्छा now अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव. अच्छा, so we're going to come to quantitative मतलब calculations, right? Calculations involving entropy change.
just spelling it, entropy. So we actually, instead of just guessing whether it's positive or negative, we're going to measure it. So first thing, how do you measure disorder? Okay, that's a question. So how to measure disorder? Now, the way disorder gets measured is, okay, let's assume I have, अच्छा इधर ना disorder का ना मैं purpose भी बता देता हूँ कि most systems they work on disorder. So let's assume that we have so let's assume we've got a piston. Piston down. So we've got this piston over here. So here. And this piston has liquid water inside it. The container has liquid water inside it. Okay, so there is water content. So there is H2O liquid, right? अच्छा, what's going to happen when I heat it? वो हमने पहले discuss किया था. अच्छा, when I heat it, let's say this is liquid water at 1 degree centigrade, right? I start heating it. तो क्या होगा? The liquid water, let's say it heats up, and now it's 50 degrees centigrade. Do you think the piston would move? The piston को क्या होगा? Can anyone guess what's going to happen to the piston if I heat liquid water to 50 centigrade? Sir, it will push the piston up if it is not a fixed system. नहीं, वो piston is freely movable. लेकिन why would it get pushed upwards? A gas. नहीं, क्योंकि there is no gas. Like water would still be liquid at 50, right? मतलब clear है? मतलब it should not be pushing upwards. हाँ, there might be very very slight evaporation at 50. मतलब थोड़ा बहुत disorder तो change हुआ होगा. Disorder increases, right? So the piston might just by a very tiny amount get pushed upwards. Particles Just as, gain kinetic energy. नहीं, लेकिन वो water तो फिर भी liquid है ना, so there's nothing pushing the piston upwards, right? Is that clear? हाँ, लेकिन what I can assume is at 50 there might be some tiny particles of vapor that might be produced, but since this is not the boiling point, तो piston के ऊपर जो effect होगा that's going to be negligible. Is that clear? Yes, Yeah. sir. अच्छा, now if I take the piston further up and I reach 101 degrees centigrade, अब मुझे बताओ what's going to happen to the piston? Get at 101, the water would all of it would turn into steam, right? So all of a sudden at 101, the piston is going to be pushed upwards by a huge amount, right? Because a lot of steam would be produced and the steam is going to push the piston upwards. ठीक है? सर ये तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट कर रहे हैं, मतलब 50 तक तो पिस्टन अपनी नेग्लेजिबल चेंज आएगा ना, लेकिन आप 50 से अबव हीट कर रहे हैं इसको. 80, मतलब हाँ, मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा हूँ ना, 80 सेंटीग्रेड के ऊपर भी नेग्लिजिबल होगा बिकॉज वाटर वुड स्टिल बी लिक्विड, राइट? जी. वो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स इवेपोरेट करेंगे, थोड़ा सा डिसऑर्डर क्रिएट होगा, लेकिन द पिस्टन वुड प्रीटी मच स्टिल बी देयर, राइट? हाँ, जी सर. 100 क्रॉस करोगे ना, 101, तो ऑल ऑफ द वाटर विल टर्न इनटू स्टीम. ठीक है? बल्कि ये फिर पिस्टन लिक्विड, की पोजीशन में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा. हाँ, फिर पिस्टन की पोजीशन में ना, क्योंकि a lot of disorder would get created and all the particles will push the piston upwards. ठीक है? तो this is when the delta S becomes very very positive. ठीक है? अच्छा, तो अब मेजर किस तरह करते हैं disorder? ठीक है? तो whenever disorder gets created, ठीक है, delta S
assuming a delta S is positive, right? बल्कि assuming के इसमें मैं लिख भी दूं, ऐड भी कर दूं कि delta S, what I mean over here is that delta S is positive, ठीक है? So if delta S is positive, तो क्या हो रहा है? Work gets produced. ठीक है, at a particular temperature, क्योंकि वो जो work produce हो रहा है ना, that is very temperature specific. यानी 50 के ऊपर वो work produce ही हो रहा है, 101 के ऊपर work produce हो रहा है, so it has, so basically in other words, ये जो entropy होती है ना, that is basically the work that gets produced at a particular temperature. If there is no work getting produced, there is no disorder getting created. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, तो जब whenever there was no change in disorder, the work wasn't getting produced. Whenever there was a change in disorder, work was getting produced. ठीक है, so in other words, if you want to measure disorder, it's the amount of work that's going to be produced at a particular temperature. ठीक है, is this clear? सारों को clear है? Yes, sir. Yes, sir. So for example, मुझे तो कि वो kettle है, iron kettle है, I put it on a stove, और just one second. अच्छा, there's an iron kettle. एक सेकंड होल्ड करते, मैं I have to put this on charge. Just one second. ठीक है, अच्छा, so assuming कि there's an iron kettle, let's say वो इसी कंटेनर के अंदर ना बीच में iron kettle पड़ी हुई है, वो ड्रॉ भी कर लेते हैं, let's say this is, वो ये उसका हैंडल है, ठीक है? अच्छा, so there's this iron kettle and I'm heating it, and let's say वो उसी के अंदर ना this immovable piston, ठीक है, it's present inside it. इसमें क्या होगा? If I heat it till 1000 degrees centigrade, which is a very normal temperature for fire, वो जो stove का temperature है, that's pretty normal, it's 1000 degrees centigrade, right? What will happen to the change in disorder of the kettle? Will negligible effect होगा या will it change a lot? Sir, it will change a lot. मतलब like if जब heat हो जाएगा तो फिर eventually वो ज़्यादा change होगी. नहीं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे केटल किस फॉर्म में होती है? केटल के फॉर्म में ही है ना, हाँ, okay, yeah. तो मतलब देयर बी नो इफेक्ट, ठीक है? उसके डिसऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है? वो जो वाटर है ना, वाटर के अंदर तो बहुत चेंज हो जाएगा. वाटर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ना, इट चेंजेस अ लॉट, ठीक है? बट द केटल वोंट चेंज अ लॉट, ठीक है? इट वोंट क्रिएट अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर. तो केटल जाके बिकॉज इट्स नॉट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर, इट्स नॉट गोइंग टू मूव द पिस्टन. वो जाके ना पिस्टन को ऊपर पुश नहीं करेगी, ठीक है? इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ठीक है? तो बेसिकली द केटल विल नॉट प्रोड्यूस एनी वर्क, ठीक है? इट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी वर्क एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? So is that clear? Concept clear? Okay, what is disorder? It's basically the amount of work that's going to be produced at a particular temperature. Is that clear? Yes, sir. Sir. अच्छा, so basically simple formula ये है कि delta S is basically minus ठीक है, it's the amount of work that's going to be produced, क्योंकि produce हो रहा है, so it's exothermic, it's negative, right? तो delta S is minus, अच्छा इनमें ना दोनों की relationship different है, साइंस का ख्याल रखना है. When delta S is positive, the work is going to be produced.
So produce का मतलब it's going to be exothermic. It's going to produce work. So work is going to be delta Q is going to be negative. Is that clear? Delta is positive का मतलब है disorder gets created, right? So work gets produced, which means in terms of work, it's joules के अंदर ना the value is going to be negative. So which is why the signs are kind of like opposite to each other. So इसलिए ना ये जो relationship है ना इसके अंदर the sign you have to put a negative sign, otherwise because if one is positive, the other one is going to be negative. If the other one is negative, the first one is going to be positive. So is this clear as well? कि both of the signs are going to be opposite to each other. ठीक है? और Okay, sir. और इसका reverse जो है ना that's मतलब let's say I take out energy and water goes to 1 degree centigrade back again. ठीक है? So disorder decreases, right? When disorder decreases, now work is going to be done by the atmosphere. मतलब piston को कौन move कर रहा होगा? It's going to be the atmosphere. Any work will be done on the system. It won't be done by the system. It will be done on the system by the atmosphere. ठीक है? तो वो फिर automatically the work will be positive and delta S will be negative. ठीक है? So this relationship over here, that's important. ठीक है? This one over here. चलिए ये clear है 100%. Is this clear? Yes, sir. अच्छा और ये भी मैं बता दूं इसका ना जो एक्चुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा ना दैट्स गोना बी वेरी इजी. ठीक है? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन द एक्चुअल क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी. अच्छा सो आई एम आल्सो फर्दर गोइंग टू एक्सप्लेन कि इसी पे आ जाते हैं वापस. So I've got an iron kettle at 1000 kelvins and I've got liquid water at 1000 kelvins. कौन ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है? या किसकी वाटर ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है? वाटर पिस्टन को मतलब फेंक रहा होगा बाहर. ठीक है? तो वाटर प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ वर्क. द केटल विल नॉट डू. अच्छा सो आइडिया इज लेकिन सर वी हैव लर्न एज वेल कि कैटलिस्ट जो है वो एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डीनेचर भी हो जाता है. कौन सी? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कैटलिस्ट जो है वो डीनेचर भी हो जाता है. अच्छा नहीं मैं ये आयरन केटल में वो पानी वाली केटल नहीं है, चाय वाली, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ. ओके ओके. ठीक है? वो आयरन की केटल मेरे जेहन में तो वो था. ठीक है? अच्छा लेकिन ये आइडिया तो क्लियर है ना कि द वाटर प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ वर्क at 1000 kelvins while the iron kettle जिसके अंदर आप चाय बना रहे हो, ठीक है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, it doesn't really produce a lot of work. ठीक है? It will be unable to push the piston upwards. Is that part clear? Yes, sir. ठीक है? अच्छा तो इधर ना मैं वो एक concept, ठीक है, I'm just saying कि when you study chemistry, right, you study two things. You study enthalpy change and you study जो भी हमने study कर लिया entropy change, right? So you basically study two things. So you've got delta H. हाँ जी. सर ये जो आप एंट्रोपी का जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया है सर, ये एएस या ए2 में से, आई थिंक इट्स फ्रॉम ए2. हाँ A2 है ना ये. ओके ओके. ठीक है? उसका AS से कोई लिंक नहीं है, इससे वो टोटली स्टैंड अलोन टॉपिक ही है. अच्छा enthalpy change versus entropy change, यहाँ पे I'm just going to bring in another concept, a very small concept, which is कि एक तो ना गलती ये हो जाती है सिलेबस के अंदर, यू स्टडी अ लॉट ऑफ enthalpy change. ठीक है? enthalpy change रियल वर्ल्ड सिस्टम है ना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, but it's really not very important. हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ये जो एंट्रोपी चेंज है ना, that's very very important, because most of the work that you see around you that's happening, engines working, बल्कि कोई भी
explosion happening. It's not because of enthalpy change. It's not because a system is producing energy or consuming energy. It's because the system is producing disorder. So most thermodynamic systems like car engines, etc., work on delta S. And basically the idea is you need to maximize delta S somehow. जैसा ऊपर वाला केस है ना कि अगर आपको कोई कहे कि maximum work produce करना है तो आप पानी चूज करो because that will maximize delta S. It will create a lot of disorder. वो जो iron kettle है, you're not going to use that because it's not going to maximize delta S. So basically when you look at systems, any chemical system, enthalpy change का कोई लेना देना नहीं है. वो heat energy produce कर रहा है, heat energy नहीं produce कर रहा, doesn't really matter. तो delta S बहुत important है. Because most systems they work on that. but एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि I've got a petrol engine है. So let's say you've got a petrol engine. तो मुझे बताओ गाड़ी क्यों चलती है? गाड़ी मतलब how does a car work? So it's not because when you burn petrol it produces a lot of heat. That heat is not important. मतलब number one चीज है कि burning petrol produces heat which is highly exothermic. Why? Because delta H is negative, right? But it's not important. वो अगर ना भी produce करता ना, it would have, but it's a completely useless feature of petrol. That it produces heat. Actually, it's a harmful feature. But if the heat is removed constantly, वो जो radiator वगैरह में पानी डालते हैं, it's the only purpose is कि you actually don't want petrol to produce heat. Heat is wasted. Car radiators remove it. बल्कि actually क्या होता है कि the number one reason why your car engine gets damaged is because the petrol engine produces a lot of heat. And that harms everything. So how does a car run? It's not because the petrol produces heat. Delta H की वजह से नहीं it's working. It's working because burning petrol has a very high delta S positive. So it's got a very high delta S positive, which means that like if I have an octane molecule and I burn it in air, right? तो कितने molecules produce होते हैं? It produces 8 carbon dioxide molecules and it produces 9 water molecules. So from one molecule you end up with a lot of molecules. तो वो जो आपका piston है ना, if I just copy that, इसी piston को copy कर लेते हैं. तो एक tiny explosion होती है which pushes the piston upwards. That explosion is not because burning petrol produces a lot of heat. It's because वो जो एक tiny octane का molecule था ना, that simply explodes, and it produces a lot of disorder. कितने molecules produce करता है? 8 plus 9, that's 17. So it ends up producing a lot of tiny carbon dioxide and water molecules. And that is what is pushing the piston upwards. तो idea clear है कि why is delta S positive so important? Is that clear? ये ब्रेन क्लियर है? बाकी हालात Yes, sir. तो ठीक है. तो point is कि delta H versus delta S. Delta H is, we're not really interested in delta H. It's all delta S. We are interested in delta S. तो
आपके ज्यादातर जो सिस्टम है ना वो टर्बाइन से लेके ये जो डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, स्टीम इंजन्स होते थे, ट्रेन्स फॉर्म होती है, व्हाई डिड दे वर्क ऑन वाटर? द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वाज कि वो डिसऑर्डर बहुत क्रिएट करता था। जैसे ही वो 100 से ऊपर जाता था ना, 101 के ऊपर, वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर एंड दैट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, इस एंथैल्पी चेंज का ना कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट रियली मैटर। बल्कि वो जो एयर बैग्स नहीं है, एयर बैग्स एक्सप्लोड करते हैं ना, तो उसके अंदर जो इंथैल्पी चेंज होती है दैट्स एक्चुअली एंडोथर्मिक। बल्कि वाटर का भी जो एग्जांपल है ना, वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट होता है दैट्स एंडोथर्मिक। ठीक है, मतलब उसका जो डेल्टा एच होता है ना, दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव। स्टीम में कन्वर्ट करना क्या होता है? इट्स पॉजिटिव, राइट? बट द एंट्रोपी चेंज इज हाईली पॉजिटिव, यानी डिसऑर्डर बढ़ता है। पेट्रोल के केस में क्या होता है कि पेट्रोल के केस में बर्निंग पेट्रोल दैट्स हाईली एक्सोथर्मिक, but the disorder that's created is a lot positive होता है। So basically we're interested in this. We don't really care about पानी के केस में भी ना डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। We don't really care what delta H is। ठीक है, हाँ, तो सर इसका मतलब है कि जितने भी कंबस्टन रिएक्शंस हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं जिनमें हीट रिलीज हो रही है, उसमें डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन एंट्रोपी जो है वो मतलब मैक्सिमम होगी इसमें। नहीं वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। अभी हम गैस नहीं कर रहे थे रिएक्शंस में, वो तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा ना। कंबशन में तो खैर ऑब्वियसली आई गेस डेल्टा एस पॉजिटिव ही होता है क्योंकि गैसेस प्रोड्यूस होती है ना। लेकिन डेल्टा डेल्टा एस, डेल्टा डेल्टा एच एस तो नेगेटिव होता है। नहीं, कंबशन में डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन डेल्टा एस तो अभी हमने कहा है ना, वो तो हम गेस करेंगे ना कि वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, वो तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा ना। बट आई एम प्रीटी श्योर कंबशन में मोस्ट ऑफ द टाइम डेल्टा एस वुड आल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है सर। अच्छा, अब मेन उस पर आ जाते हैं कि कैलकुलेटिंग, बल्कि सिंपल फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, कैलकुलेटिंग डेल्टा एस। ठीक है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी के ना टेबल्स पहले से मौजूद है। एट रूम टेम्परेचर फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड। यानी हमें पता है कि ऑक्सीजन का ना डिसऑर्डर, मतलब ऑक्सीजन गैस को अगर रूम टेम्परेचर पे लेके आओ ना, तो वो कितना पिस्टन को ना मूव करेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो कि what is the amount of work that's being done by different substances at different temperatures, and they've already been calculated और उनके ना tables are present। ठीक है, तो you don't really have to do that calculation। तो अगर एक reaction है ना, you've got reactants and you've got products। अच्छा, you've got reactants and you've got products। तो अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों की एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी इट्स ऑलरेडी नोन, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज, इट्स द एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी क्या है, माइनस द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस सिंपल फॉर्मूला से यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि आपका वो क्या है, एंट्रोपी चेंज किया उस रिएक्शन का। इज दैट क्लियर? मतलब फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। जस्ट रिमेंबर, you know the standard entropies of all the substances, they've already been calculated। वाटर की एंट्रोपी एट रूम टेम्परेचर क्या है, यू नो दैट। ठीक है, यू दैट्स ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रोपी एट रूम टेम्परेचर, यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, सो इफ यू हैव अ रिएक्शन, you know the entropies of the products, you know the entropies of the reactants, difference निकालो, you'll figure out delta S, change in entropy। Is this clear? Yes, sir. तो पहले तो ये फॉर्मूला हम देख लेते हैं किस तरह यूज करना है उसमें पास पेपर्स में ना।
सिंपल फॉर्मूला बस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, राइट? तो फॉर एग्जांपल आई हैव स्टार्ट पे चले जाते हैं। हाँ, ये वही कह रहा है कि कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, here's your reaction. अच्छा, here's your reaction number 2, ठीक है? So you're supposed to calculate delta S. तो क्या होगा? It's just products of entropy minus the reactants entropy. तो delta S is that. तो बैठ के कैलकुलेट कर लो। प्रोडक्ट्स इज SiHCl3 314 मोल्स का ख्याल रखना है। द स्टैंडर्ड एंट्रोपी इज स्पेसिफिकली फॉर 1 मोल। तो 314 and H2 is what? It's 131. और minus the entropies of the reactants. Make sure you use brackets. तो reactor entropies का silicon is 19. वो देख भी लो, silicon is a solid, right? So उसकी entropy is very less. इसका मतलब वो पिस्टन को ऊपर मूव ही नहीं कर रहा रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, and 3HCl. So 3HCl is 187. तो बताओ क्या है? What is delta S for this reaction? -135. ठीक है, it's -135 joules per Kelvin per mole। और ये joules per Kelvin आया कहाँ से था? We did that ना, कि we said कि delta S is what? It's delta Q, the work that is Sir, produced at a particular. delta S is equal to delta Q divided by T. हाँ, तो वो जब कैलकुलेट कर रहे थे ना एंट्रोपी, तो वो जूल्स पर केल्विन हो जाता था ना। और पर मोल का नहीं सर, मतलब मोल। नहीं, वो पर मोल ना स्टैंडर्ड एंट्रोपी है ना। स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल। ओके सर। ठीक है, ये मैं उधर ऐड भी करता हूँ। स्टैंडर्ड एंट्रोपी का मतलब जैसा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती थी, 1 मोल के लिए होती थी। ठीक है, ओके सर। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। Sir, at the end of this lesson, please give us some worksheets for practice. हाँ, ये तो मैंने भेजी भी नहीं है उस पर ग्रुप पे, मैं फिर भेज देता हूँ। Okay, sir. ठीक है। अच्छा, ये वाला इसमें भी आई थिंक इस डेल्टा इज तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन इज गोइंग टू आस्क यू फॉर डेल्टा। क्या मांगे इसने? हाँ, डेल्टा एस ही मांगा उसने, डेल्टा एस। तो इसका डेल्टा एस बताओ कि डेल्टा एस इज प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। इसमें बस वैरायटी ये हो सकती है कि समटाइम्स इज गोइंग टू गिव यू डेल्टा एस, और वो बीच में से इज गोइंग टू आस्क यू फॉर द मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसका बताओ कि प्रोडक्ट्स इज हाफ N2, दैट्स 182 डिवाइड बाय 2, हाफ O2 तो 205, वो भी डिवाइड बाय 2, हाफ I2 सॉलिड है नहीं गैस है तो 261, एंड दैट इज डिवाइड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे ख्याल रखो, वो इज नॉट यूजिंग स्टैंडर्ड वर्ड। ठीक है, वो नॉट हटा दो, वो सिर्फ एस लिखा हुआ है, तो वी डोंट नो व्हाट द टेम्परेचर इज, लेकिन उसने बस टेबल बना के दे दिया। अच्छा, देन देयर इज 2H2 दैट्स 70। अच्छा, ये मेरे हो गए प्रोडक्ट्स माइनस माय रिएक्टेंट्स व्हिच आर 42। एक ही रिएक्टेंट है 42। तो व्हाट इज डेल्टा एस? 427. कितना? 427? जी सर। हाँ, बस इसमें ख्याल ये रखना है कि जूल्स पर केल्विन पर मोल, इसमें ख्याल ये रखना है कि डोंट मेक मिस्टेक्स ऑन द कैलकुलेटर। ठीक है, क्योंकि जब वो इतने ज्यादा प्लस माइनस होते हैं ना, there's bound to be some sort of error। 427 वही आया, 427 ही है। ठीक है, तो अच्छा, ये तो पहले ही सॉल्व हुआ हुआ है। हाँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, ये वही हुआ हुआ है, प्रोडक्ट्स माइनस द
minus the reactants. अच्छा और भी देख लेते हैं. तो ये बस आखिरी कर लेते हैं क्योंकि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. इट्स एस प्रोडक्ट्स. ये बता दो जल्दी से. प्रोडक्ट 2 PBO दैट्स 69 times 2. O2 जो है 205 minus the reactants which is 77 times 2. क्या है? What's the answer? 189. ठीक है, that's 189. ठीक है, बस इसमें और कुछ चाहिए. बस the only variety of question that you're going to get is कि he's probably going to give you 189 और बीच में ना he might say कि ये value नहीं पता, 77 is not known, so you just put x over there and do the same thing and it's so you just work backwards. ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया. तो नेक्स्ट क्लास में we'll do Gibbs free energy which is जिससे ना ये बाकी वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे. that would be the last part. ठीक है, तो we'll do that tomorrow. ठीक है, same time. Okay, sir. Okay, sir. Thank Okay, sir. you. Okay, take. Allah Hafiz.